आज का शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है ऐसे शख्स की किताब, एक ऐसे अदीब की किताब के हवाले से मुनक़िद किया जा रहा है। मुश्किलें दरपेश आती हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ, कमोबेश मुझे 30 साल शायद इस किताब का विमोचन होने वाला है, जिस किताब की रस्म इजरा अंजाम पाएगी। मोहल्लों और अपनी आबादियों से, बस्तियों से जुड़े हुए थे, उसको याद करके एक किताब लिखना, और उसका सेकंड पार्ट ये जिसको जींद अंटा। मैंने जब पहली किताब हुई थी तो मैंने पूछा था कि ये अंटा क्या है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग मैं जानते हूँ जो बाद में जुड़े। अंटा मैंने खासतौर पर देसवाल साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। उनकी एक साथ मैंने ये पाया कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके घर के लोगों ने उनका बराबर से साथ दिया, और ये काम इन चीजों को और मुख्तलिफ अखबारों में, रिसालों में छपता रहता है। ये आसान काम नहीं है। देखिए उस मजमून की कैफियत अफसर और सब कुछ रहे हरियाणा में, बहुत ही मालूमाती, बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ी शख्सियत। उस मजमून को पढ़ने के बाद ये उसका सब so much. 7 years at least guarantee for you, madam. And books are the immortal children of the authors. That if you would not be forgotten the moment you are dead and rotten, either write things worth reading or do things worth writing. He is doing both. He is writing what can be read and it is a good read, and he is also doing something which can be written by others. So, great thing. I think it is one of the best things. When a person like Mr. Deswal, he sets about on the mystic path of writing, it becomes nobler than the author himself. And that piece becomes, something which is accepted by the masses. People accept that and welcome that kind of writing. I have been his fan when we had not even met. And I used to wonder what kind of person it is. I was so keen to meet him, and I was very happy when a couple of years back I had the opportunity to meet him and know him a bit. And now I think I have the privilege of calling him a friend also. You see, his writing is effortless and lyrical. And his writing style is direct, lucid and very elegant. I feel so happy when I read what he writes. He writes with passion and enthusiasm. So much of passion and so much of enthusiasm. And because of that, he himself, one thing that I admire about him is that he steers clearly away from any literary ego or intellectual ego. Though he has infinite possibilities, because of, he's a man of exceptional sensibilities. You see, I have had the opportunity of working with Dr. Abdul Kalam. And one thing which I learned from him, which I find, which I am going to connect with Mr. Rajbir Deswal, is that he always used to tell me that let your enthusiasm for life never die. With all the imperfections, life is still a wonderful celebration. And I think Mr. Rajbir Deswal is an excellent example of that. I was talking to Mrs. Deswal that people find reason to be happy. People like him and me, we can be happy anywhere. Not that we have not gone through our turmoil and turbulences and tragedies and things like that. All of us have their own share of that. But having said that, I think life is to be celebrated. And his writings are wonderful. I am so fond of what he writes. And let me tell you that publishing 600 articles in various newspapers, but I know that for one which gets published, in my case, at least 7, 8 get rejected. If my hit rate is very poor, his hit rate must be better. And you see, when I look at him and the way he sings and the way he goes about admiring. So Mr. Rajbir Deswal lives life at his own terms, which is very powerful, very important and very difficult, living life at your own terms.
and then living the kind of life which he lives. अलामा इकबाल का एक शेर है, मैं कई जगह कोट करता हूँ, I hope I am able to recall it. I get nervous with so many people looking at me and such eminent people sitting around the stage. जहाँ में अहले ईमान सूरते खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबे वहाँ निकले, वहाँ डूबे यहाँ निकले. Men of faith live like a sun. They go down on one side and come up on the other side. You know, balance. बात सीने का दाग होती है, बात रोशन चराग होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात है. Respected Mr. Rajbir Deswal, Madam Deswal, in fact this is a great honor for me to be speaking at the launch of Mr. Deswal's book, because I had never anticipated this day would come in my life, ever. We all are human beings and we tend to nurture a few prejudices. And by chance, if you are a born Punjabi, you are allowed to nurture an extra few. So since I am a thoroughbred Punjabi, I too have my own set of prejudices, one or two related to Haryanvis too, with all due apologies to all the Haryanvis. उस टाइम मैं एक पार्ट टाइम लेक्चरर थी और राजबीर देसवाल सर तब अम्बाला में इनकी पोस्टिंग थी. And there was an event in college. He was roped in to be the chief guest for the occasion. I was sitting in the audience, and this gentleman, he ascends the few steps up to the stage, and I slightly nudge my colleague sitting beside me, "Who's this gentleman?" And she says, "Mr. Rajbir Deswal." Is this the same Mr. Rajbir Deswal who writes for newspapers, middles and columns? And she says, "Sure." Well, I could put a face to the name that I had been reading in the newspapers. That was the day. And 5 minutes later, I whispered in my colleague's ear, "Do you have any clue if he's a Punjabi?" She glares at me and she says, "He's a Haryanvi Jat." My jaw actually dropped and I thought, are Haryanvi men allowed to be this handsome? But here's this gentleman who is handsome even when he speaks. Jokes apart, but that was the day when I could put a face to the name Rajbir Deswal. And once a reader connects with the visual appearance of the author, the connection becomes all the more deep. And I started reading his articles with more enthusiasm. Years later, when I also ventured into writing, Mr. Deswal was the first name that came to my mind, and I reached out to him for guidance and support, required for a novice like me. And in the process, he often sent me words of motivation and sometimes word of caution too. All said and done, we developed a sort of symbiotic relationship of mutual respect and admiration. Then I started writing for newspapers also. And then, in the consecutive years, I realized that most of the contemporary middle writers, including me, at some point of time, in some manner, perhaps consciously, perhaps subconsciously, or maybe unconsciously, we try to emulate Mr. Deswal's writing. I mean, the flamboyant and adventurous spirit of his writing, the enthusiasm with which he presents his characters and places,
the charm of his rustic humor and the subtle tongue-in-cheek satires, we all try to copy him, mimic him perhaps, or take inspiration from him. Like to divulge into the details कि वो चाय की पत्ती कहाँ छोड़ देते हैं शेल्फ पर और कहाँ नहीं. But you name the thing and the man has it for you. Whether his experiences of being a cop, his fascination for Bollywood, or his penchant for golf lately. I mean, who would have thought कि एक article लिखा जा सकता है at the chance sighting of a random or stray golf ball, and that chance sighting could be the telltale. And we have realized that everything that he writes comes from his passion. He sings in a mellifluous voice, we all know that. That is his passion. Passion speaks for him. Dostoevsky once said this about Nikolai Gogol, the Ukrainian author. We have all come out of Gogol's own. क्योंकि मुझे इनकी किताब के बारे में बात करना है. So I think I want to speak on behalf of his wife who's sitting there, and I'm so like the lady. She is been the support and the love of his life forever, ever since they were in college. So मैं उनकी तरफ से बोलूँगी. School. अच्छा चलिए अभी इधर आ We were together in our 7th grade also. Then we met at the university. क्या बात है, क्या बात है. तो बबली जी की तरफ से ऐसा है कि शायद ये सोचती होंगी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें अपने मियाँ के बारे में सुन के कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के बाद, जब भी आता है मेरा नाम राजबीर तेरे नाम के बाद, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं. जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं. खुश कर रहा होता है ना. So he has that special ranking when, and he knows that I have always loved his Jind has taken on a new look. तो सबसे पहले अगर आपकी इजाज़त हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी. Please go ahead. वैसे सबसे पहले just to make myself a bit normal, Colonel Chima had been speaking sense, and these two ladies, they are making me really so very, nervous. Yeah, I'm having sweating so much of sweat on my forehead, and my hands are also not very comfortable with the mic. So excuse me if I go wrong, somewhere. नहीं पुलिस वालों से तो हम थरथराते हैं. आप बेफिक्र रहें. So village, is it like a telescopic memory, or is it just a passion you had which made you the man that you are today, a multifaceted gent, a very very decorated police officer. बहुत सारी चीजें आपके नाम के पीछे आती हैं जब आपका नाम लिया जाता है बड़े अदब से, एहतराम से. And then when you play your golf game with your buddies, when you sing a song for all of us, and you post it every day, when you write all these very absorbing columns, तो ये क्या सब अंता की देन है, क्या ये जींद की देन है, क्या है ये सारी कहानी? Really, thank you very much. In fact, you have answered my question, and the answer lies therein, of course. Only I have to add to this is that yes, I remain clung to my moorings, and where I belong, I stay there only, and I have not said goodbye to the nostalgic past. It lingers on in me, reliving at times and resurfacing at times, and with creative instinct, maybe inborn or whatever. So I give it a verbal, platform, and this is how the middles and all these things are. Thank you. Cannot be strong and robust if the roots are not deep. तो इन्होंने अपनी जो जड़ें हैं इतनी मजबूत रखी हैं कि यहाँ तक ये पनपता है ये वृक्ष, है ना. So now I want to, if I love reading the book again and again, तो उसमें कुछ चीजें जो मुझे बहुत मुतासिर करती हैं वो ये है, that he talks about very honestly about the little things, the antics that he did as a young boy. जो चीजें ये छोटी छोटी चोरी करते थे. बोल सकती हूँ उसके बारे में? आपने तो किताब में लिखी है तो मैं बोलूँगी. जैसे कि जब दूध वाला दूध देके जाता था तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 2 घूंट चुपकर से पी लेते थे. किसी को पता नहीं चलता था कि सरदार जी जो दूध देंगे इन्होंने 2 घूंट बीच में से पिए हुए फिर जाके ये. That's a very Haryani thing to do, right? But
बहन की कोफिया में से जो कि पर्स को कहते हैं जाटू भाषा में, उसमें से एक चुप करके चेंज निकाल लेते थे, बहन को पता भी नहीं चलता था। अनीता दीदी थी शायद, है ना? हाँ, अनीता जी के जेब से पाउच में से निकाल के he would just kind of take it away. When she would create a ruckus, he would give some, I guess. और एक और चीज़ करते थे, जब इनके दादाजी सो जाते थे तो ये क्या करते थे, उनको थोड़ा ड्रिंक का शौक था, जैसे सबको शाम को होता है। काफ़ी शौक था काफ़ी शौक था वो कह रहे, तो अच्छे से वो जब पी के मस्त हो जाते थे, राज्य जाते सन जिन्हों पर जा पीछे गई था, जो तो बाबूजी रज्जे होंगे सन, दादाजी थे जाके उन्होंने जेबा जो सारे पैसे काट लेते सन। Oh my God, that goes and he takes all the money from all his pockets and he just takes it away until the man gets up with the money. इसके बारे में तो कुछ मुझे ज़रूर ही बताइए, मतलब हद ही हो गई। मेरे ख्याल में हर एक आदमी इस तरह की जो है ना चोरी चकारी करता ही है बचपन में। मैंने थोड़ा सा उसको खोल के लिख दिया। इनफैक्ट होता यही था कि दादाजी ड्रिंक करते थे, शाम को हम लोग बच्चे जो है उनकी पॉकेट से पैसे निकाल लेते थे और सुबह जब होश आया तो वापस भी देने होते थे। एंड यस, यू टॉक्ड अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो। When in the village you have a barter system, you don't have coins and currency notes to exchange. So what we did was from a heap of say wheat, उससे बीच में से वो निकाल के पाइप भर के ऐसे ऐसे करके so that my mother would not notice it, and we would go to the बनिया and grocer and कोई तरबूज ले लिया, कोई चीज़ ले ली। So ये सभी के साथ है। थोड़ी सी ये है कि मैंने थोड़ा उसको जूसी बना के एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक और बात, you know, which really endeared me in this book was that इन्होंने बड़ी ऑनेस्टली कहा है कि मैंने देखो दुनिया घूमी है। मैंने न्यू ऑर्लिन्स में मार्डी ग्रा देखा है, फ्रेंच क्वार्टर्स में गया हूँ मैं टाइम स्क्वायर देखा है, मैंने बॉन्ड स्ट्रीट, ब्रुक स्ट्रीट देखी है लंदन में, और मैं हर जगह मैं शॉन्ज़-एलीज़े में चल के आया हूँ, पेरिस में। लेकिन जो बात जींद की मेन बाज़ार में थी, मेन स्ट्रीट में थी, वो कहते हैं ज़िंदगी में मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है ये कमाल की चीज़ है जब इंसान इतना इश्क मोहब्बत करता है अपने शहर की गली को, तो वो क्यों ना राजबीर देसवाल बन जाए, है ना? उसके बारे में बताओ। In fact, if you have a look at the tagline of Jind, the tagline says that this was a town which slept soundly. Yes. I'm talking of the 60s when you didn't have noises to be heard. I talk about my village, Anta, and the tagline says that moon at times rested here. And how would moon rest here? The scenario emerges that there is blessed water at the cool of the night, during the cool of the night, and the moon's reflection is falling, and there are stars and stars lying on the water surface. So that's how this imagery got me to make this tagline about Anta. Yes, I have been places, but definitely, as I said, I return where I belong. बहुत अच्छा लगा, बहुत सब सो रहे हैं अमन ईमान से, वो कमाल की जगह ही होगी। So now I want to talk about for all the people in the audience who don't know much about some typical colloquialisms in हरियाणवी जिनके बारे में बात की जाती है, जैसे पंजाबी में भी होते हैं। So he talks about बूरा, जो असी भी पंजाबी में कहते हैं बूरा खाना के होते नाल है ना, देसी घी के साथ it can't be रहा था डालडा obviously. Then he talks about goji, he talks about papri, he talks about खुद्दा। उसके बारे में लोगों को बताओ, मुझे बड़ा मज़ा आया इनके नाम सुन के और कैसे अब ये खाए जाते हैं और कहाँ ये होते हैं। I don't know, many people would relate to it. The only thing is that I have said it in English and rest of the people they know it in Haryanvi. Goji is mixed, lassi mixed with milk, and khudda is a kind of a jaggery, and it's I think fermented jaggery or so only thing is that I have given them some kind of an English, nuance or added some English meaning or something to that. बाकी जो है वो लापसी राबड़ी हमारे हरियाणा में होती है, हरियाणवी कुजीन है ये, so it has its own unmistakable taste, which I have mentioned once in a while here and there in this book. Yes. वो एक जोक याद आ गया मुझे, बहुत तक से तो नहीं है कोई,
रोहतक से। अच्छा, वो नंदिता फौजी बैठी हैं यूपी में, वो कर्नल्स भी बैठे हैं, कई फौजी बैठे हैं मेरे दोस्त यहाँ। तो जब यूपी में कोई आया करता था तो वो रम पी के आया करते थे, विस्की पी के आते थे, स्कॉच पी के आते थे। तो वो कोई अफसर जब रोहतक चला गया, कहते हैं हमारे बेटे रोहतक आए जो है वापसी पे आए हैं। They don't offer you drinks or they don't offer you scotch or rum or whatever. So yes. बहुत सारे लोगों का जिक्र आया है और बहुत प्यार और मोहब्बत से यू टॉक्ड अबाउट the people closest to you, uncles, mamas, chachas, taus, brothers, आपने किसी को नहीं छोड़ा। तो इतना अच्छा लगा कि बहुत ही close knit, entwined with love family रहते, जहाँ सारे इकट्ठे होते थे, उसके बारे में बताओ और कैसे सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। In Jind, we are 6 siblings. I'm the only brother of my 5 sisters. Then 18 cousins. तो इतना भरा पूरा परिवार था। Wow. And to add to your observation, I control found Dadaji in my book. जी. And the word appeared 882 times. That is true. That is true. You totally love the man. क्या तो वो चौधरी थे, क्या तो उनका रोग था, उनकी बातें तो पढ़ने लायक है. Each one in the audience should know about him. He had so much. वो जो हाथ में डंडा पकड़ते थे और वो सारा कुछ. Not only that, my grandfather, my chacha will vouch for me, my brother will vouch for me. We had never been under the Britishers. We had our own principality in Jind. So my Dadaji was member of the King's Council and एक बार हुआ क्या, I wrote जब वो सेशन होने वाला था तो पजामी उनकी टांग में फंसे ना, और ultimately हुआ ये कि जब वो क्लिक होना था तो he was holding his pajami like this और ऊपर अचकन थी, and that photo is with me even till date. So this was kind of a humor that my Dadaji used to relate with so much of laughter and recalling every bit of humorous life. मुझे याद आया है कि किताब के एक पेज में आपने लिखा है कि जब आप शादी होती थी तो 50 तो आपके घर के लोग हो जाते थे और 100 भी हो जाते थे और यहाँ बैठे 50 और आपने बताया मुझे इतना प्यार जाना, तो आप लड़कों की बारी लगती थी कि फलानी बुआ को ले आओ जाके, वो कैसे प्यार से आती थी, उनको इज्जत से बुलाया जाता था. It is very relevant in these times when brothers don't like sisters because they're going to ask for some land. They're going to ask for something. This is a very relevant thing in your book. कि कितना प्यार अपने बहनों और बुआओं को दिया है और हमने देखा है और शायद आपके बच्चे भी समझते हो. ये एक प्रिविलेज रहा है कस्टम. हमारे चचा आप बताओ जी जरा कि कैसे लड़कियों को बुलाया करते थे. सावन के टाइम बताइए, शादी के टाइम, तीज के टाइम. जसबीर देसवाल एमएलए एक्स-एमएलए हैं हमारे. में एक रीति रिवाज था जी. हर ब्याह शादी में अपने बहनों को, बुआ को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता था जी. और शादी में तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे, फैमिली मेंबर और रिश्तेदार ही इतने हो जाते थे. आज तो वो प्यार वो लेके आते थे और उनके सारे बच्चे साथ में. क्या बात है, कितनी रौनक होती होगी घर में. बहुत अच्छा लगता था. बहुत परिवार पूरा रिश्तेदार इकट्ठे होकर शादी की खुशी मनाते. बहुत शुक्रिया, मुझे पता है. आप दिलीप कुमार से मिले, आप कितने एक्टर से मिले, आप एक्टिंग भी करते हैं, आपका अंदाज भी बड़ा मतलब ड्रामेई भी है, कभी कभी आप गाते भी हैं. तो जैसे आपके दोस्तों ने कहा आप हीरो भी लगते हैं, ऐसा सुनने में आया था, है ना. अब ऐसा है कि वो जो आपकी जो एक लगाया था सफीदों में और रानी लक्ष्मी बाई, पता नहीं क्या क्या, मेरे पास कोई 50 फिल्मों के नाम हैं जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें. तो मेरी दादी जो चचा की मदर थी वो स्क्रीन के आगे से दौड़ी थी कि रेल. और ग्रामोफोन की भी बात हुई है, आपने उसमें ये भी बताया कि कैसे वो चलते थे. लेकिन जब लाइव डांस एंटरटेनमेंट होता था ना, वो अंडा में होता था कि जी. तो आप मुझे बताओ कि जैसे जैसे रागिनी भी गाते थे लोग, वो भी गाते थे, आपको थोड़ी सी आती है तो सुनाओगे? मुझे इनफैक्ट मैं गजलें गा देता हूँ, फिल्मी नगमें सब कुछ गा देता हूँ, बट रागिनी अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी नहीं गाई. हालांकि रागिनी जो है वो आई बिलीव इट्स ए पॉप सॉन्ग.
it's a pop song. It's not a folk song. That's true. Ragini has been taken. अच्छा, Yeah. ठीक है. So Ragini for Haryana has now become a pop song, but it's never a वाला है कोई कुछ है. So you were friends with a lot of Sikh songs. वो हाँ डेरी जो है सिक्स की होती थी, डेरी होती थी. तो उसमें आपने ये भी बताया है कि वहाँ पे आपने वो गाना सुना था गल्ला लाहौर दियाँ कहीं बज रहा था. है ना कि ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ सड़क हथ ला के रखिया तपती पई वो था कुछ इस तरह से था उसमें. वो ताऊ झगड़ू एक रिकॉर्ड चला करता था. ताऊ झगड़ू जो है वो हरियाणवी में बोलता था उस टाइम. हरियाणवी के रिकॉर्ड्स तो होते नहीं थे, तो ब्याह शादियों में ताऊ झगड़ू एक रिकॉर्ड बजा करता. अच्छा फिर वो जो कनाडा के टाप के चले जाते थे. इनफैक्ट कासिम की जो झोपड़ी सी थी हमारा जो ना 5 किले बाद की तरफ पीछे हैं, तो वहाँ कभी भी जाते तो इतना अच्छा, इट वाज सच ए नैसर्गिक सा महसूस होता था. इट वाज सच ए सिल्वन काइंड ऑफ ए सराउंडिंग वेयर यू कुड फील एट ईज विद योरसेल्फ, always in the lap of nature, and it was मेरीगोल्ड, गेंदे के फूल देख वो लगा के रखते थे. 2-4 ही होते थे, जस्ट एक दो खूबसूरती से आपने उसको बड़े प्यार से And if the rains would come, my mom would go and go inside the hut, small hut, very small hut. उसमें एक खटोला सा चारपाई सी पड़ी हुआ करती थी. But it was such a mesmerizing thing to experience. थोड़ा सा वो हाथ लगाने की जो ना आजकल तो फिंगरप्रिंट्स हैं, आजकल तो एफिडेविट्स होते हैं शादी के, ये वो रजिस्ट्रेशन होती है. उस ज़माने में खाली जब दूल्हा दुल्हन आया करते थे तो उनके हाथ जो है वो मेहंदी में लगा के दीवार पे लगाया करते थे. दैट वाज सम काइंड ऑफ अ आइडेंटिफिकेशन मार्क दैट दिस बॉय बिलोंग्स टू दिस गर्ल एंड देयर हस्बैंड एंड वाइफ्स. कितनी सुंदर बात थी ना, उसका हाथ का निशान था. अच्छा एक और बात थी जो मुझे तो खैर नहीं मालूम था कि कैमल के ऊपर टैक्स होता था, मतलब ऊंट पोस्टिंग हुई तो दादरी में ये ऊँटों का टैक्स चलता था. And he was known to have this tax abolished. So he is still remembered in those areas. बड़ा अच्छा आपने शेर लिखा है सिंह कि को आना हो गयो और ऊँटों के टैक्स को जाना हो गयो. यस ये बोलते थे. यस. तो ब्रीदिंग बॉक्स I think काफी हो गया मेरे बस ख्याल में. लास्ट बात ये करूँगी कि आपने जो बड़े प्यार और खुलूस से अपनी दो बक्से बचा के रखे हुए हैं, और कॉमेडी को इतना अच्छा भी नहीं लगा. वो कहने लगी कि ऐसे रख रहे हो जैसे कोई जिंदा चीज़ हो, और आपने कहा हाँ, और आप पहली दफ़ा आपका उनके साथ इस बारे में हुआ. तो वो जो बक्से थे उसके पास दादा जब पी लेते थे तो झाँके कहते थे सेक पुरो भागली याद करते थे वो अपनी बीवी को. तो आप you read it with so much passion. I know. I appreciate that. थैंक यू सर. असल में 2 बॉक्सेस थे, वो सीजन्ड वुड के बने हुए थे जो मेरी दादी के दहेज में आए थे, और उनमें दादाजी की बंदूक और चीज़ें कहीं रखी हुआ करती थी. तो हम लोग करनाल में जब शिफ्ट हुए तो मैं वो संदूक उठा के ले आया. तो मैंने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे लेके जाने हैं. तो वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, नॉट दैट वी हैड एन आर्ग्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यस वी हैड एन आर्ग्यूमेंट. इन्होंने गुस्से में कहा कि ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे इनमें जान. मैंने कहा हाँ इनमें जान तो जान है और अभी भी है ना वो बक्से. तो जाते जाते ये बताओ क्या होता है, और मतलब जर्मन टेक्नीशियन आया रशियन ट्रैक्टर के लिए, ये क्या था? रशियन ट्रैक्टर हमारे विनोद भाई साहब वो था, जीटर ट्रैक्टर था. अच्छा. तो उसके लिए जर्मन टेक्नीशियंस आया करते थे, इंजीनियर. तो यस वो 10-15 दिन खोल के इंजन बैठ जाया करते थे, खूब अपना घी मक्खन खाना. तो उसको मकोड़ा कहते थे ट्रैक्टर? मकोड़ा DT14 जो ट्रैक्टर होता था उसको मकोड़ा लोग. अच्छा. और भूंड होता था 3 व्हीलर जो 3 वो चलते हैं. पंजाब में भी कहते हैं. बहुत मेहरबानी, मेरे पास बहुत सवाल है, बट आज मुझे लगता है we need to hear the chief guest in Yes, also yes, Vivek ji. yes. So I'm going to let you go, but book it is going to keep you want to love your roots. It's going to make you all want to love the people you are, the forefathers from whom you have come, and to keep it going. Thank you. Thank you, Lily. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Pleasure, Thank sir. you. And thank you all for the very dignified chief guest, Mr. D.S. Desi Saab, the author and the host, and the apple of everyone's eyes today, Mr. Rajbir Deswal, Mrs. Deswal, eminent personalities in the audience, ladies and gentlemen.
बहुत मंत्रमुग्ध होके हम लोग ये कार्यक्रम में शामिल हैं। काफ़ी बातें जो हो रही हैं वो हमारे दिल के करीब हैं सभी के, चाहे वो पंजाब के हों या हरियाणा के हों, चंडीगढ़ के हों या पंचकुला के हों, जो कि पंजाब हरियाणा का पार्टी है पंचकुला। मैं कोई नई जगह नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। इसमें होते हैं तो कुछ भी कहना बड़ा सोच समझ के कहना पड़ता है। सर्विस जब छोड़ सकते हैं तो थोड़े से हम क्रिएटिव और आर्टिस्टिक और हो सकते हैं। राजबीर देसवाल साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो उनको जिंदगी से प्यार है और जिंदगी को उनसे प्यार है। You see, a writer like him, a personality like him can only be present on this planet in this manner, with such full verve, when he loves life itself with all its nuances and colors and aspects and shades and glories. So he is someone who observes, but he also loves his observations. He ingrains those observations and then he describes them. Describes them not only in words, in the written word, but also in his speeches, in his songs, in his personality. So the personality has been talked about by my fellow speakers. I guess Mr. Deswal was always like this, to some extent. But like Windows or Intel computers, version 1.0 has become version 11.0 or 12. iPhone कौन सा चल रहा है? 14 या जो भी चल रहा है? कौन सा? 14 plus. So Deswal Saab is probably 18 plus. His own versions have obviously been improving, if I can say so. Because wherever hope for enlargement of the consciousness, even further, and a job like the police force sometimes does its best to stifle that creativity. My father was posted in Jind in 1978 or 77 rather, as SSP of Jind. I was a 10-year-old and we had come back from London से हम आए थे और वहाँ आके मुझे हैप्पी नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया। मैं जींद की बात करूँ, हाँ सर एक है स्कूल, अभी हैप्पी नर्सरी स्कूल के क्या बात है, फिर तभी आप हैप्पी रहते हैं। लेकिन मैं आया था विकम स्कूल लंदन से और मेरे पापा तो चलो वहाँ इंडिया हाउस से SSP जींद लग गए, उनको तो एक्लेमेटाइज होने में, बिकॉज पहले भी हरियाणा से गए थे, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। मुझे मुश्किल लगा। 10 साल का बच्चा तो 3 साल लंदन पढ़ के आया, फिर जींद के हैप्पी नर्सरी स्कूल में आ गया, क्योंकि अच्छा स्कूल है। लेकिन मेरे लिए वो जो कॉन्ट्रास्ट था वो इतना था कि मैं रोता। And the SSP would feel very embarrassed that his son cries every day in the school. It took me a while to get over it. But I fell in love with Jind in the next few months because we had Garmi ki chutiyan. And in those 2 months I remember that I was in joy because summer holidays for bachas are just... So Jind at that time was my favorite, and then I was pulled away to modern school in Delhi. तो फिर दिल्ली में गुड़गांव में आ गए थे फादर साहब के पापा, तो वो जींद का एक्सपीरियंस सिर्फ 4 महीने का था। लेकिन उसके बाद भी ऑफिशियल ट्रिप्स पे गया हूँ। जो आपने जो लिखा है, जो लिली मैम ने आपसे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में निकलवाया है, जो मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत है। और ये दिस एबिलिटी टू बी रूटेड एंड येट टू कीप ग्रोइंग इन वर्जन आफ्टर वर्जन सेल्फ, this is something outstanding which you exemplify. I also happened to interview Mr. Rajbir Deswal for my show, which is called the Good Vibes Show. आजकल ये मिलेनियल्स जो है ना, ये वाइब्स पे बड़ा बिलीव करते हैं। मेरा जो दायरा है वो मिलेनियल्स ही, जो कि इस हॉल में थोड़े से, इफ आई कैन से सो, कम है नंबर में। पता नहीं कोई है भी तो हाथ खड़ा है। नहीं एक भी तो 30 साल से कम उम्र का है यहाँ पे, 30 से कम। ओके, यस यस, दे वांट अनदर। All right, very good. आप भी हैं, very good. आप भी हैं sir. So the vibes really matter. He was on my show and the vibe could be
what we can feel in this hall is not only the love of people for the host, Mr. Deswal, as a person, but also the vibe. So these good vibes are immeasurable, at least in 2023, perhaps thousands of years or hundreds of years from now, we will measure vibes as well. But what I want to say is that this zest for life, this love for life is more important even than the accomplishments that we garner in our journeys. Being a senior police officer, being a published author of so many books, a middle author of such quality and so prolific, it's virtually impossible. Everything becomes worthy of a medal in Mr. Deswal's presence. It could be the Bisleri bottles on the table, it could be the mic, which is often a treacherous friend. I mentioned in some other program, इसकी बैटरी वीक हो जाती है थोड़ी देर के बाद, हैंडल माइक की. हम लोग भी बोलते रहते हैं तो पता होता है. It could be the colors, combinations of people where, I mean, the clothes in the hall. करती है सर जिंदगी को नजदीक से देखने के लिए. Keep your sanity in place by writing, things like that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और many civil services officers, IPS officers and officers of other departments are here from the government. सरकार जितना जिंदगी दिखाती है वो कोई और पेशा नहीं दिखाता. You meet the common man and the uncommon man. And not only meet, you understand, you try to understand. And then if you're a writer, then with all my apologies to Mr. Desi because he was Chief Secretary. Chief Secretary साहब की मीटिंग में भी फिर आपको अपना नेक्स्ट मिडल याद आ रहा होता है, या DGP साहब की मीटिंग में भी. तो वो राइटर ब्यूरोक्रेट जो है वो भी एक ऐसी स्पीशीज है जो बहुत ज़बरदस्त है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है लिखने की. सो माई ओनली लास्ट पॉइंट टू मेक इन दिस शॉर्ट स्पीच, बिकॉज बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो इन्होंने कहा कि राइटर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो लास्ट पॉइंट यही है कि सबके अंदर एक किताब है, सभी के अंदर इस हॉल में कम से कम एक किताब है. अगर आपने नहीं लिखी तो उसको शुरू कर दीजिए, और अगर आप 10 लिख चुके हैं तो 11वीं शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो लिखना है ये परमानेंस है इसमें. आई थिंक शम्स मेंशन कि 50 साल 100 साल तक वो बातें, वो लिखी हुई बात जो है वो जिंदा रहेगी. मुझे लगता है वो एवरलास्टिंगली जिंदा रहती है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल स्पेस में आ गया, अगर फिजिकल किताब, प्रिंटेड किताब कहीं जल भी गई, खराब भी हो गई, कई बार फाइलें वैसे भी जला दी जाती हैं एक्सीडेंट या गलती से या जानबूझ के भी, लेकिन जो डिजिटल चीज़ है वो कभी नहीं मिटती है और ना मिटेगी. सो वंस यू हैव रिटन समथिंग इट स्टेज फॉर एवर. द ओरल वर्ड, द स्पोकन वर्ड में डिसिपेट एंड डिसइंटीग्रेट एंड बी एक्सटिंग्विश्ड, and YouTube videos may also not be available after a while, but the written word will last. So please write if you can. And Mr. Deswal sir, my congratulations once again, and more power to you, more flowery writing to you, more depth to you, more love to you, more happiness to you, and madam also. Thank you very much. Jai Hind. कहने का काम ये एक राइटर और एक लेखक का होता है, और किताब की शक्ल में आपको उन्होंने फरमा दिया, बता दिया कि ये सालों साल ज़िंदा रहता है. अब चूँकि IT का ज़माना है, उसकी फॉर्म बदल गई है, उस तरह से और वक्त बढ़ जाता है उसके ज़िंदा रहने का. तो दोस्तों आइए, अन्यथा वहाँ की यादें तालियां ज़रूर लगाइए इस मौके पर. आज तमाम लोगों की अफजाई से किताब दूर दूर तक पहुँचेंगी, इस किताब की तहरीरें बहुत दूर दूर तक पहुँचेंगी. देसवाल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक. 22वीं किताब और इंशाअल्लाह आइंदा भी 44वीं और 50. Liliswaran, Mrs. Sonika Sethi ji, Shams Tabriz ji, Justice Nawab Singh, and all the distinguished well-wishers of Rajbir who are present in full strength over here. Just looking at the cover of the book, Jind, Anta, stories of 60s. In fact, while the other speakers were
saying what they had to say. The first thing that struck me was that majority of the is plus 60. And because of that, what Mr. Deswal has narrated, particularly in this book, when he talks of the India of the 60s and the Haryana and the joint Punjab of the 60s, I think most of us present here in the audience can directly relate this to what we went through in our own childhoods. On a personal note, like we belong to a village in district Jalandhar, and even though my father was in government service, but during every vacation we used to go to our village, and almost till the early 80s, every year we would spend at least 2 months in the village. And quite a few things that Rajbir has narrated in his book does ring a bell, that something similar, we were also witness to something similar happening in our surroundings in the rural setup when we were children, growing up in our growing years in those years. So in that respect, I think, though, as it has been said, a book is timeless, is as relevant for people of today as of the past, but definitely I think people who grew up in the 60s will greatly relish what has been written here, and in many ways it will also revive their own memories of their own childhoods. I was looking back at the history of what Vivek Atre mentioned to us, bureaucrat writers. And I started off with Haryana Police because I happen to be a son-in-law of the Haryana Police. And in fact, both my father-in-law and mother-in-law, though they have stopped writing now, in the late 70s and early 80s, their middles used to appear quite frequently on the editorial page in the Tribune, particularly my mother-in-law, popularly known as Billa Brar, though of late she has stopped writing. And if we look at Haryana Police, Mr. Deswal is in the eminent company of his seniors as well as juniors. Mr. Sprat Mohan occasionally used to write. Then of course Mr. Ranjeev Dalal is a prolific writer, even now off and on. He does keep on writing. And though not middles, but there are other people who are into serious writing, like Mr. K.P. Singh, who writes on jurisprudence. And today morning I just happened to discover that there are 2 more people who are joining this league. One of them is Arsh Verma, who is just going to release his first book on fiction. I think it's going to come out very soon. He's the son of one of our colleagues. And Mr. Manbir Singh is writing a book on the history of Rajaram. I think his book is also going to come out soon. Of course, on the side of the Indian Administrative Service, though not writing, though of course one of them writes middles. I'm referring to Mr. R.S. Verma. He has a great felicity of the written word. But then there are others who have written fiction, poetry. To mention a few, Mr. S.K. Mishra, who wrote his autobiography. Then we have Rajni Sekri, who dabbles in poetry. Then we have Dhira Khandelwal,
then we have Sumita Mishra, and of course, Mr. Vivek Atre, who is now full-time into speaking and writing, and very successful at that. Colonel Chima, in his opening remarks, had referred to what Benjamin Franklin said, and I also fully endorse, where he says, either write something worth reading or do something worth writing. And I fully endorse that this is applicable in both ways on Rajbir. His writing is also worth reading, and what he is doing is also worth writing about and about remembering for the future. Then another famous writer, Ayn Rand, says, words are a lens to focus one's mind. And I think this is a philosophy which I think Rajbir has been truly and meticulously following since his younger days when he started writing. Of course, if we go through his academic background, he had formal training also in this field, but it's not the formal training which really distinguishes the true writer from the ordinary one. It is that inherent, so many of my preceding speakers, that zest for life, that eye for detail, and that sensitivity to whatever is happening all around you, and to truly imbibe the true spirit of what is happening in society around us. Print media is full of writings on artificial intelligence. Chat, GPT is being spoken of, and we speak of the digital world. And as far as AI is concerned, even the best of experts as of today are not in a position to really predict what somebody who's from this part of the country, he can really truly and well relate to what is happening in the book. Of course, this is only one of the series of books that Rajbir has written, and there are already 24 already written and many more in the offing. And of course, his articles, as has been mentioned, already exceed 4,000. It has also been mentioned about the other facets of his personality, his knowledge of other languages, his dabbling in Urdu poetry, his passion for singing, his interest in Bollywood, and of course, his latest passion is golf. And because I also happen to occasionally go to the golf course, so one does see Rajbir with his partners, and one of his partners is here, Mr. Sapra, and some of the inspiration of Rajbir I was going to say something else, that Mr. Sapra has also been inspired to write middles. His middles have also started appearing in the Tribune. क्यों राजबीर जी देसवाल सप्रा साहब राजबीर जी से मिलने से पहले भी मिडल लिखते थे, इनके मिलने के बाद ही लिखने शुरू किए? Basically, he is the editor of my article. Okay. So I think there would be many other budding writers also who are present here, and I think Rajbir will provide the proper inspiration and guidance to them. As has been mentioned jocularly somewhere else, the simile has been given that
launch of a book by a male writer is the only occasion where a male can deliver. So I think today is something akin to a new child coming into the world. The last 24 books and the ones that are going to come in wishes that your pen should continue writing with the same vigor, with the same vitality, and most important of all, the joie de vivre, which is जो जीने की हसरत जिसको बोलते हैं, that continues with the same vigor as has been there for the last so many decades. So once again, wishing you all the best on this joyous occasion of the launch of your book. Thank you. Thank you, sir, for having spared your very valuable time. We know your time is very precious. आपने टाइम निकाला और इस फंक्शन को आपने रेस किया. आपका बहुत 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 शुक्रिया. आपका तहे दिल से मशहूर हूँ. एक चीज़ जो अभी तक रह गई इस किताब के बारे में वो ये थी कि इसका जो अंटा का पार्ट है उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन होना. जींद का जो पार्ट है वो ओरिजिनल मेरा है और रमन मोहन ने अंटा को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है. मैंने उसमें जो फाइनल एडिटिंग है वो की है. सो ही ऑल्सो डिजर्व्स ड्यू क्रेडिट, मिस्टर रमन मोहन, माय फ्रेंड, सीनियर जर्नलिस्ट. आप में बहुत से लोग हैं ऐसे जो विवेक जी के अलावा मिडल राइटिंग करते हैं. सोनिका तो बदस्तूर छपती हैं, लिविस रणजी इंटरनेशनल फिल्म की पोएटिस्ट हैं. यहाँ चेतना वैष्णवी जी आई हुई हैं. इफ शी इज़ देयर प्लीज रेज योर हैंड मैडम. शी इज़ लेफ्ट आई थिंक. शी इज़ अ नोन मिडल राइटर. एंड बिल्ला बरवार जी जो आपके मदर इन लॉ हैं, उनके बरार साहब के तो हम बहुत बहुत पहले से मिडल्स पढ़ते रहे हैं सर. राइटिंग के बारे में कहा जाता है कि राइट एज यू स्पीक. इफ यू राइट एज यू स्पीक देन दैट कैरीज द वर्ल्ड विद यू. जैसा भी आसानी भी रहती है. एक बार एक डीजी साहब थे, मैं कोई फाइल लेके उनके पास गया हुआ था, नाम नहीं लूँगा. सो अब वो अपनी फाइल में बहुत ज़्यादा मशगूल रहे और मेरी जो है वो मेरी तरफ कोई तवक्को थी ही नहीं. सो करीब 10-15 मिनट हो गया. मैंने खांसी भी थोड़ी बहुत की, बड़ी दबी दबी सी, लेकिन उनकी जो है वो चुप्पी नहीं टूटी. थोड़ी देर में हुआ क्या कि उनकी जो है सोचते सोचते ये लार टपक गई और वो फाइल पे गिरी. और जब वो लार जैसे टपकी और फाइल पे गिरी तो एक मिनट तो मेरा वही बन गया था. एंड ही ऑल्सो रियलाइज कि ये पाँच चार जरूर लिखेगा मिशन सोच. सो यस, ठीक कहा आपने कि ये सिचुएशंस ऐसी मर्ज होती हैं. सरकार में अगर आप निठल्ले ही बैठे हैं तो भी हो जाती हैं एक राइटर के लिए. तो वो भी खाली बन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. जैसे मैंने जींद और अंटा का जिक्र किया, ये मेरा बॉयहुड का टाइम था. 14, 15, 16 साल की उम्र तक का जो था वो जो इम्प्रेशंस थे. आई डोंट से एनीथिंग इज़ ऑथेंटिकेटेड हियर, ऑल्दो इट इज़ ट्रू, although it is very honest, although it is authenticated in my own way, in my own social जिसको कहिए reckoning में. I don't vouch for any historical details about anything happening. It's only culture, social interactions, and my own impressions as a boy, recollected, not in tranquility of course, but yes, recollected very often and written about. लाइक मिस्टर देसी सेड के सीरियल की तरह से मैं लिखता चला गया. कोई सोची समझी किताब भी मैंने नहीं शाया की है. बहुत सपोर्टिव रही है. सागर इज हियर, ही कॉट अ फ्लाइट फ्रॉम गुड़गांव यस्टरडे नाइट एंड ही रीच्ड हियर. माय एल्डर सन सावन, ही इज इन अमेरिका. ये बच्चे मुझे कहते हैं कि आप तो इतनी कहानियाँ हमारे गाँव की बताते हो, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे. सो आई थिंक आई हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल दीज थिंग्स फॉर देम टू रिलेट दीज थिंग्स टू their kids. My wife has been very supportive all through in the sense that even while I'm writing and she is at times editing and castigating and pulling me कि नहीं ये क्या लिख रहे हो, ये इसको ऐसे करो वो करो.
So the entire family has been either suffering on my account or I don't know, but yes, they have been very supportive, and I thank everyone in the family as well. जो अंटा में और जीन में जो characters हैं, they exist in pure flesh and blood, sir. They are not fictional. Let me admit. जो गांव के नाम हैं, जो चचा के, दादा के, ताऊ के, भाई के नाम हैं, जो रिश्तेदारों के नाम हैं, वो ओरिजिनल हैं। और ओरिजिनल हैं इसीलिए मुझे शायद वो फ्लेवर भी आता गया लिखने में कि शायद वही रिलेशनशिप में बयान कर पाया या जिस तरह से भी। इसमें नथिंग इज़ fictional, nothing is imaginative. It's all pure in pure flesh and blood, all hard bones. आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा. All my golfer friends are here, Mr. Bhatia, Mr. Sapra, all my friends are, Ravinder Sabharwal is there, इस फैमिली के साथ हैं. कोड़ा जी मुझे कहते हैं कि कोड़ा जी knows me through the Facebook and my writings only. He's 87 years old. चीमा को भी 87 ही बोल दिया था. So he is a great fan of mine. I'm so proud to be having him here. इन्होंने मैसेज किया कि can I bring along my wife, and I said कि more अच्छा लगेगा, खूबसूरती आएगी बात में. So everyone whosoever is here, I'm deeply indebted to you all, madams and sirs. आपकी शाम मेरे ख्याल में ये पिछले 1.5 घंटे से जो है वो थोड़ा सा हमने आपके लिए चाय का, जलेबी का, पकौड़े का भी इंतज़ाम किया है मौके को देख के. Now I'll take leave of you and I'll ask Sagar to propose a formal vote of thanks. Thank you everyone for having spared your very valuable time and appreciating my content that's been documented in Jind and Anta. Thank you. इससे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ, सफरिंग नहीं हुई है सबके बिहाफ पे, on behalf of the entire family. We've always loved the way Dad has been expressing एक छोटी सी छोटी बात को लेके उसको एक पूरा 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना कोई आसान बात नहीं है. It's very difficult. एक छोटा सा एक आर्टिकल मैंने भी लिखा था, if I remember correctly, आपने उसको एडिट किया था. आसान नहीं है. विवेक सर भी कह रहे थे कि लिखो, सबके अंदर एक किताब है, बिल्कुल एक किताब है. बट जैसा कि I can express myself with words, spoken words, yes. But probably जब मैं लिखने पे आऊँगा तो वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसका मुझे कुछ मतलब I don't know if I'll be able to do justice to what I want to say. But of course that does. And बात हो रही थी वो गोल्फ बॉल की कि गोल्फ बॉल के ऊपर एक मिलने पे उस पे एक सो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे जिस तरीके से आर्टिकल्स डैड ने लिखे हैं, so those have been, I mean, personal favorites, I'll be honest. So yeah, just wanted to say that before the formal vote of thanks. Before that, I would request Dad to present a small, this is a compilation of his books to our chief guest, Mr. Desi. These are 5 books, sir. 3 books. Desi today for taking out time and spending a good amount of time. I know 1.5-2 घंटा हो चुका है हम लोगों को यहाँ पर. Thank you so much, sir, for your time and your words. Girl Chima, I think he had to go. I think he's not here. Mr. Vivek Atre, sir, I have been following you for a very long time. I have seen your TED talks and so yes, I'm not a part of the millennial part of it, but yes, I've been following you, and I'm really, I really thank you from the bottom of my heart to be here and grace the occasion. Professor Sonika Sethi, thank you so much. Mrs. Lily Swaran, thank you. आपका जो सेशन था, I think
भाई आप रुक ही नहीं रहे थे मतलब सवाल पे सवाल आ रहे थे. आई थिंक इस ऐसे मैंने कभी पर्सनली नहीं देखा है. सो थैंक यू सो मच for this amazing session that you had, the conversation session. And of course I would like to thank Mr. Shams Tabrezi. ये मतलब हमारा पूरा इवेंट जो होता है वो पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक हर बार जो उनका नया शेर आता है ना तो वो एक नया ही कुछ अलग ही अंदाज में लेकर आता है. उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. So we have some arrangement of some tea and snacks. Thank you so much everyone who is present here. Thank you. Please join us for a cup of tea and some snacks. Thank you.